तू का सिला मिले, मुझे माल व ज़र की हवस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे। मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी नजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ऐ खुदा मेरी रोज व शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। Dear brothers and sisters, you are all well aware about the fact that every morning assembly starts with the recitation of holy Quranic verses. So for this noble deed, I would like to invite respected Abid, would you please come on the stage and recite some sacred verses from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से वही नस्बते, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी जात से वही नस्बते, वो जो अज़मतें थी ओवैस की, वो जो राबते थे बिलाल के। Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, verily the one who recites Quran beautifully, smoothly and precisely, he will be in the company of the noble and obedient angels. We once had a teacher, the teacher of teachers, who changed the whole world for better and made us better creatures. He was our Lord Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the teacher of whole mankind. Now to give a tribute to our Lord Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I would like to invite Sadia Hamid from 9th standard. So let's give a big hand for her. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बकर है नात खानी म्यान नबियों, बकर है नात खानी म्यान नबियों, मैं चमना माए जाने म्यान नबियों, मैं चमना माए जाने म्यान नबियों, गमूदा द्यो बचसना गीर करम, गमूदा द्यो बचसना गीर करम, मैं क्या हगो यथ जवानी म्यान नबियों, मैं क्या हगो यथ जवानी म्यान नबियों, बकर है नात खानी म्यान नबियों, मैं चमना माए जानी
कर है नात कानी म्यान नबियों। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। Now let's move towards our topic session. For presenting topic, I would like to invite Tanzila from 10th standard. In the name of Almighty Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Respected principal, sir, teachers, seniors and juniors, and all my dear friends, please accept my Islamic greeting. Assalamu alaikum everyone. It's me, Tanzila from class 10. First of all, I would like to thank Brother Yasir who gave me a golden chance to express my few words in front of you all. Now, I am going to deliver a speech, and my speech is about land restoration, desertification, and drought resilience. As the world commemorates World Environment Day on 5th of June 2024, the focus sharpens on critical issues belonging to our planet's landscapes. Land restoration, desertification, and drought resilience this year's theme underscores the urgency of collective action to combat these challenges and safeguard the health of our ecosystem for future generations. Dear listeners, we all are aware about the fact that World Environment Day is celebrated on 5th of June every year to highlight the importance of the environment for all living beings. Dear listeners, land is a vital resource for producing food, preserving forests and biodiversity, facilitating the nature management of water systems, and acting as a carbon store. Appropriate land management can protect and maximize the service for society. However, recent practices have contributed to loss of productive land from desertification and land degradation. If you really think the environment is less important than the economy, try holding your breath while you count your money. Here is the need to delve on some critical subjects to combat desertification and restore degraded land. And soil and industries stay worship in land restoration and utilization of degraded land and wasted land. We need to focus on engaging experts and policymakers in a discussion about the strategic worth of public-private partnership to mainstream land restoration. Simultaneously, the urgent need to build resilience against drought looms large in the face of increasingly severe and frequent dry spells. Droughts not only jeopardize agriculture and water resource but also deepen existing inequalities and exacerbate poverty. जंगलों को काट कर कैसा गजब हमने किया, जंगलों को काट कर कैसा गजब हमने किया, शहर जैसा एक आदमखोर पैदा कर लिया। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लगता है। हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर एक बार, हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर एक बार, गुनाह खुद करता है और लानत भेजता है शैतान पर। Thank you for paying attention to me. Assalamu alaikum.